Good afternoon, students. My name is Hemlata Yadav and I am your teacher, and we were doing the genes and proteins in the class 12th biotechnology. We have started this topic and now we will be resuming from it. We have studied about expression proteomics, how the cancer cell, normal cells have different gene expression, structural proteomics, that how the particular cell organelle is forming a protein complexes, functional proteomics, how there are different kinds of protein involved in the formation of particular structure like nuclear pore. Then we have also discussed genes and proteins, that there is no correlation between the mRNA produced and the protein content of the cell, that the eukaryotic genes have large number of proteins instead of small amount of mRNA produced. So mRNA number can be less, but the number of protein produced can be more because of the gene splicing, because of the gene editing, mRNA editing. There are 200 different types of modification a protein can have. Then we have studied this process through which gene can give rise to multiple protein product, the general central dogma, the transcriptional regulation, the translational regulation, and in the transcription DNA and the formation of DNA to RNA, various transcriptional regulation, alternative splicing, mRNA, these we have. And when after the RNA when it is converted into protein during the translational regulation we have studied. And when proteins are formed, they can be made and converted into 3 different types, like proteolysis, post-translational modification, localization, process through which genes can give rise to different. History of bioinformatics. Bioinformatics has emerged as a scientific discipline. This we have studied that in 1962, Zuckerberg and Pauling proposed a new approach of studying the evolutionary relationship using sequence variability. This initiated a new field called molecular evolution, and the various protein sequences were similar, and their similarities were targeting towards or signifying their evolutionary relatedness. And Margaret Dayhoff proposed that protein sequences undergo variation during evolution according to the certain patterns. She noted amino acids not replaced, but at random they were altered with specific preferences. For example, amino acid with similar physicochemical properties. Some amino acid, tryptophan, was generally not replaced, so it is conserved. And based on the several homologous sequences, a point accepted mutation, PAM, matrix could be developed. This led first foundation for the subsequent work on the sequence comparison using quantitative approaches. The National Biomedical Research Foundation compiled and the first comprehensive collection of macromolecular sequences in the Atlas of Protein Sequence and Structure, published in 1965 to 1978 under the editorship of Margaret O. Dayhoff. Dayhoff and her research group pioneered the development of computer methods for the comparison of protein sequences for the detection of distantly related sequences and duplication within the sequences, and for the inference of evolutionary history from alignment of protein sequences. 1980 data library was established at the European Molecular Biology Laboratory, EMBL, to collect, organize and distribute nucleotide sequences, data and related informations. Now its successor is the European Bioinformatics Institute, EBI.
These study we have already discussed in our previous videos. Primary aim of bioinformatics is to spread scientifically investigated knowledge for benefit of research community. So this is the aim. हमारा लक्ष्य क्या है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का? ये स्प्रेड करना साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेटेड नॉलेज को, जो भी रिसर्च में और इन्वेस्टिगेशन के दौरान, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, उसको नॉलेज मिली, उसको कम्युनिटी को देना, रिसर्च कम्युनिटी को देना, ये एम होता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। और दूसरा एम होता है जिसमें डेवलप करवाए जाते हैं सॉफ्टवेयर फॉर डाटा एनालिसिस, कि डाटा को एनालाइज करवाने के लिए तरह तरह के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। द वर्ड बायोइन्फॉर्मेटिक कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी और इंफॉर्मेटिक्स का, एज इट बिकम क्लियर दैट बायोलॉजिकल पॉलीमर सच एज न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीक्वेंसेस ऑफ डिजिटल सिंबल। तो बायोइन्फॉर्मेटिक जो है, जो बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन से बना है वर्ड, उसके अंदर क्लियर हो गया है कि बायोलॉजिकल पॉलीमर्स को, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स हैं, उनको ट्रांसफॉर्म्ड कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीक्वेंस, इनको सीक्वेंसेस और डिजिटल सिंबल के इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कैन बी एनालाइज्ड, और सेव भी किया जा सकता है इनका डाटा, और इनको एनालाइज भी किया जाता है। मोर ओवर ओनली limited set of letters is required to represent the nucleotide and amino acid monomers, बिकॉज इनके नोमेनक्लेचर हैं, लिमिटेड सेट ऑफ लेटर्स ही यूज कर सकते हैं हम न्यूक्लियोटाइड या फिर अमीनो एसिड को बताने के लिए। इट इज द डिजिटल नेचर ऑफ दिस डाटा दैट डिफरेंशिएट जेनेटिक डाटा फ्रॉम मेनी अदर टाइप ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। दूसरी तरह के बायोलॉजिकल डाटा से बायोइन्फॉर्मेटिक्स के डाटा को डिजिटल होने की वजह से ये उससे अलग है। डिफरेंशिएशन यही है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो डाटा है वो कंप्यूटर पे स्टोर है, डिजिटलाइज्ड हो चुका है। अनदर की पॉइंट इज दैट द यूज ऑफ द सीक्वेंस डाटा रिलाइज अपॉन एन अंडरलाइंग रिडक्शनिस्ट अप्रोच, के जो की पॉइंट ये है दूसरा कि सीक्वेंस डाटा जो है, यूज ऑफ सीक्वेंस डाटा, ये रिलाई कर रहा है अंडरलाइंग रिडक्शन अप्रोच पे। सीक्वेंस इम्प्लाइज स्ट्रक्चर विच इन टर्न इम्प्लाइज फंक्शन, क्योंकि सीक्वेंस जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर इम्प्लाई करता है, और जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन पे इम्प्लाई करता है। यही अप्रोच है सीक्वेंसेस एंड नोमेनक्लेचर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ रहे हैं सीक्वेंस और उनके नोमेनक्लेचर, जो नेमिंग का प्रोसेस है। द नोमेनक्लेचर वी अडॉप्ट इन बायोइन्फॉर्मेटिक वर्क इज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी आईयूपीएसी में दिया हुआ नोमेनक्लेचर ही हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो नोमेनक्लेचर के लिए आईयूपीएसी सिस्टम यूज होता है, रिकमेंडेशन उसकी यूज होती है। इट इज यूजफुल टू फॉलो this nomenclature system so that the data sets from the different laboratories situated around the world can be compared, जिससे कि लेबोरेटरीज के डिफरेंट डाटा सेट जो हैं, जो वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर जो बायोइन्फॉर्मेटिक के डाटा हैं, उनको कंपेयर करा जा सके। हम एक ही मीनिंग समझे जो किसी एक कंट्री में जो डाटा सेव हो रहा है उसका, और किसी दूसरी कंट्री में जो डाटा स्टोर हो रहा है, यूनिफॉर्मिटी रहे, ताकि इसलिए आईयूपीएसी नेमिंग वर्ल्ड वाइड यूज होती है, ताकि कंपेयर कर सके हम इजीली और यूनिफॉर्मली कंपेयर कर सके। तो ये यूज है हमारे नोमेनक्लेचर का। डाटाबेस इंस्टीट्यूशन एंड द जर्नल्स दैट पब्लिश रिसर्च रिपोर्ट फॉलो दीज रिकमेंडेशन। तो जो भी जर्नल हैं जो इनसे रिलेटेड रिसर्च पब्लिश करती हैं, उनको भी यही नोमेनक्लेचर यूज करना होता है। न्यूक्लिक एसिड के लिए, प्रोटीन के लिए, डिटेल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में बी टच्ड अपॉन, बट वी सजेस्ट यू रेफर टू आईयूपीएसी वेबसाइट। इसके डिटेल के लिए आईयूपीएसी वेबसाइट से पता चलेगा। फॉर रूटीन वर्क यूजिंग न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस डाटा, वी डिस्कस द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। रूटीन वर्क के लिए जो हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ दिया हुआ। ह्यूमन कम्युनिकेशन लैंग्वेज, ह्यूमन कम्युनिकेशन लैंग्वेज में लेटर्स न्यूक्लियोटाइड, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में न्यूक्लियोटाइड बेसिस,
हम जिनको न्यूक्लियोटाइड बेसिस बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, जो कि हमारे 4 बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, ये जो हमारे 4 बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन। तो इनको हम इन 4 लेटर्स, इनको इंग्लिश के कॉमन लैंग्वेज में हम लेटर्स बोलते हैं कि AGTC, एंड न्यूक्लियोटाइड बेसिस बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड के नोमेनक्लेचर में। वर्ड्स, वर्ड्स हम बोलते हैं ह्यूमन कम्युनिकेशन लैंग्वेज में, और जब हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करें तो वर्ड्स यहाँ पर जीन को रिप्रेजेंट करती हैं, एक्सॉन को रिप्रेजेंट करती हैं, इंट्रॉन को रिप्रेजेंट करती हैं। So 3 things are shown by the words, like हमने पढ़ा है क्रिस्टल प्रोटीन की जीन जो है cry1AB। सो दिस इज अ जीन। तो ये हमें वैसे कॉमन लैंग्वेज में लग रहा होगा कि ये वर्ड है, बट वहां पर ये हमारा एक जीन है जो क्रिस्टल प्रोटीन को कोड करता है। तो यहाँ पर सेंटेंस, अगर सेंटेंस हमें दिया जा रहा है तो पूरा ओपेरॉन है, तो पूरा ओपेरॉन है, यानी कि एक हमें पूरा डीएनए का स्ट्रैंड दिया है जिसमें रेगुलेटरी जीन आई है, एंड देन उसके बाद रेगुलेटरी जीन के बाद से पहले रेगुलेटरी जीन का प्रमोटर है, और फिर रेगुलेटरी जीन है। तो पी और आई is given, and then operator region is given, and then after operator there is ZYA region is present, ZYA, 3 genes are present back to back. So ये वैसे तो एक सेंटेंस की तरह हमें लगता है, पर ये एक्चुअली में क्या है, एक ओपेरॉन है, लैक ओपेरॉन का डिजाइन। तो सेंटेंस जो हमारे कॉमन लैंग्वेज में हम जिन्हें सेंटेंस कहेंगे, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम उन्हें ऑपेरॉन कहेंगे। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मतलब कॉमास, कोलन्स, इन सब के वजह से टर्न, किंक, बेंडिंग। पंक्चुएशन हमें बेंडिंग बताती है, किंक बताती है, कहीं पे किसी चेन में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर हमारा क्रोमोसोम होता है, यानी कि बहुत ज्यादा हमने लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस, सारी चीजें यूज करी है विद पंक्चुएशन, तो वो हमारा क्रोमोसोम बन जाएगा। तो क्रोमोसोम इज द लार्जेस्ट थिंग, इट इज अ चैप्टर इन द biological, in the common language what we call chapter is chromosome in the biological language. So this is the nomenclature which we use human communication and biological system में। DNA and protein sequences, summary of single letter code, IUPAC recommendation। so summary दे रखी है यहाँ पर सिंगल लेटर कोड की, सिंबल दे रखा है, उसका मीनिंग दे रखा है, और बेसिस दे रखे हैं कि G is a symbol, meaning is G only, and base is represented by capital G is guanine। सेम एडेनिन A से रिप्रेजेंट होता है, और एडेनिन का बेस एडेनिन है, A का बेस एडेनिन है, यानी T is represented for thymine, C is represented for cytosine, R is represented G or A, purine, R is represented for purine, it can be G or it can be R। Then M is represented A or C, amino group. Y, T or C will be showing pyrimidine. So its letter Y is meaning pyrimidine. Then K is there, K is G or T, keto. S is G or C, strong 3 hydrogen bond. And W is A or T, weak 2 hydrogen bonds. So this is shown here. And so as H, A or C or T, not H, G in the alphabet, B, G or T or C, not A, B follows A in alphabet, G or C or A, not T, not U, V follows in U alphabet, G or A or T, not C, D follows in the C in the alphabet. So this is the these are the nomenclature. The symbols, their meaning, and the basis for the nucleic acid sequences are presented in the table 3. The first 4 bases, G, A, T, C, their symbols and the basis for nomenclature is clear, while determining the sequence data through the experiments
Sometimes the sequence identified at particular position may not be clearly identifiable due to the compression artifacts or other secondary structure related problems. In most cases, the problem can be solved by repeating the experiments and also by sequencing the complementary strand. In few cases, ambiguities may persist. In such cases, the most probable results are inferred from the chromatograph. For instance, at a position where ambiguity is not resolvable, then between G and C, but one can be sure that there is a possibility of A and T in the same position. Arises when we start encountering the symbols that means more than one. Again, the IUPAC system come to aid the symbols to be used in complementary strand, compressing corresponding to the symbols at the same position in a given strand are specified. In certain cases, the complementary symbols are same as in the given strand because in both the cases, they mean the same set of bases. Definition of complementary symbols. Symbol A, B, C and their complement are, the symbols of the protein which are given A, B, C, D till Y. These are the symbols. Single letter symbols are also given for the amino acids. A is for alanine and R is for arginine, N is for asparagine, D is for aspartic acid and G is for glycine, C is for cysteine, Q is for glutamine, E is for glutamic acid, capital G is glycine. So here, 2, 3 are similar in their, we can say sound, like arginine is represented by R. N is showing here asparagine. So asparagine is having nitrogen, so it is represented by N. And D is totally different, aspartic acid. C is similar for cysteine. Q is totally different, glutamine. U is used for glutamine. E is symbol used for glutamic acid. It is also different. So one is aspartic acid, which is shown by D, and other is glutamic acid, which is shown by E. This we should remember. This is how by some mnemonic or by some understanding we can learn these symbols easily. G is same. It is glycine. H is histidine, it's also same, so it will be easy to remember. I is isoleucine, so isoleucine is I, so it is also having initial, same initial. L is leucine, it's also having same initial. K is lysine, this is different. So this we have to remember. So few we have to remember like lysine, which is represented by K, glutamic acid, which is presented by E, glutamine, which is presented by Q, and aspartic acid, which is presented by D, and asparagine, which is presented by N, and arginine R. So these are the few different which we have to give more attention to, although we have to learn all, but still because other are having same initials, we can remember them, and those are different, we have to remember. K is lysine, M is methionine, F is phenylalanine. It's similar in the sound, so it is taken F. P is proline, it's having same initial. S is serine, it's having same initial. T is threonine, having same initial. W is tryptophan, so it's having a different letter. So we have to remember that W represent the tryptophan. Y is tyrosine, which is having same initial. V is valine, V same initial. B is X, S,
X part gene. Z is like with the means that these are different types of groups. Like if they are not having the carboxylic group, they are written as like this. So I hope this nomenclature is clear to everyone. The concept of directionality in the biological system, usually the direction in which DNA and RNA are synthesized is 5' to 3'. This we know. Okay, the DNA is having a particular polarity, or we can say the processes which are there in the central dogma, like replication, transcription, translation, all are done in the 5' to 3' orientation direction. Why? Because this is specific for the enzymes to work. Enzymes इसी direction में work करती हैं. This is universal and therefore it helpful to adopt this fact that as a way to collect the store data, और हम ये डाटा स्टोर करने में भी आसानी रहती है क्योंकि सारे प्रोसेसेस 5' to 3' होते हैं. The nucleotide sequence are generally present in the database as they have been submitted, published, subject to some conventions which have been adopted for the database as a whole. और database के लिए the nucleotide sequence को generally present किया जाता है, database को submit करा जाता है, publish किया जाता है कुछ conventions में which have been adopted by database as a whole. The sequences are always listed in the section direction 5' to 3'. Bases are numbered sequentially beginning with 1 at the and the 5' end of the sequence. The complementary sequence is described with C indicating next to the position of the sequence. Complementary sequence also run in 5' to 3', but in the opposite direction to the given strand. Only one strand of the DNA sequence is given in the database entry. The complementary strand will always will have to be inferring using programs available in various packages for or from various websites. We will see the details of a database entry in the next section. In the case of protein, they are synthesized in the cell and N terminus to the C terminus. Proteins have a direction from N terminus to C terminus. The nucleotides are having direction from 5' to 3' end. Protein are having the direction from N terminus to C terminus. It is useful to adopt this convention in database entry for protein sequences. मतलब प्रोटीन के अगर अमीनो एसिड के सीक्वेंस हम लिखेंगे तो हम एन टर्मिनल से लिखना शुरू करेंगे, वो हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड होगा और फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन लिखेंगे सी टर्मिनस तक. And the advantage here is the universality of the fundamental biological process in almost all living organisms. क्वेश्चन दिया गया है, if you are given a sequence without any label, how will you find out whether it is a DNA sequence or RNA sequence or protein sequence? तो अगर आपको कोई डीएनए आपको कोई बिना लेबल के ही कोई सीक्वेंस दे दिया जाए तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो डीएनए का सीक्वेंस है, आरएनए का सीक्वेंस है या फिर वो प्रोटीन का सीक्वेंस है? तो यूजुअल अप्रोच तो है बाय स्टैंडर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम को, लाइक सीक्वेंस सर्च प्रोग्राम स्कैन फर्स्ट 20 सिंबल्स. सीक्वेंस का जो सर्च का प्रोग्राम है पहले 20 सिंबल को स्कैन करता है, उसे सर्च करता है. जो सिंबल इनकाउंटर्ड स्विच बिटवीन एनी ऑफ द 4 बेसिस ओनली. अगर सिग्नल के अंदर सिर्फ 4 बेसिस होते हैं एटीजीसी तो वो पता लगा लेता है कि ये डीएनए सीक्वेंस है. इंस्टेड अगर उसमें टी की जगह यू होता है तो पता लगा लेता है कि आरएनए सीक्वेंस है, क्योंकि थाइमिन की जगह यूरैसिल में आरएनए में ही होता है. और अगर सिंबल के अंदर 20 लेटर ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा लेटर है, 20 लेटर है, तो वो हमारे अमाइनो एसिड ही हो सकते हैं, क्योंकि हमारे अमाइनो एसिड ही 21 है. ट्वेंटी नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स आर देयर, सो 20 लेटर्स रहेंगे तो वो प्रोटीन का सीक्वेंस हो जाएगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस: cDNA मॉलिक्यूल, जीनोमिक डीएनए, ESTs, GSTs, ऑर्गेनेली डीएनए, अदर मॉलिक्यूल्स. सो ये हमारे कुछ डिफरेंट तरह के सीक्वेंसेस हैं जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं. cDNA is the large number of sequences deposited in the database were determined from cDNA molecules
While filling up the sequence entry form, you must tick at the right position to indicate whether the sequence being deposited is a cDNA sequence. This data also will provide when a sequence is retrieved. Thus, in the case of cDNA sequence, one is looking at the expressed part of the genome. Genomic DNA, sequencing of the genomic DNA has become very routine nowadays. The genomic DNA is a storehouse of information, which expressed part is represented in the cDNA. And जीनोमिक डीएनए में होल जीनोमिक डीएनए का रूटीन इंफॉर्मेशन रहेगा. cDNA में सिर्फ एक्सप्रेस्ड डीएनए का पार्ट रहेगा. EST में एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में क्रेग वेंटर ने जो सीक्वेंस किए थे लार्ज नंबर को cDNA मॉलिक्यूल को, और वो randomly picked cDNA clone से million of ESTs has deposited a special database called database EST. EST data is used to infer expression pattern by counting the number of EST correspond to each gene divided by the total number of ESTs. तो काउंटिंग हम इसमें एक्सप्रेशन पता लगा सकते हैं कि टोटल EST में से कितने EST किसी सेल में निकल रहे हैं. And GSTs क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में the enzyme Mumbead nuclease MNase cleaves in between the genes. The genomic DNA library generated by the digestion of MNase was used for gene identification in Plasmodium falciparum. The approaches used were similar to ESTs, and one read with the of the sequence was obtained from either end. This data is referred to as genomic sequence tags. Usually, the genomic DNA sequence refers to the nuclear DNA. Organelle DNA, eukaryotic cells have organelles such as mitochondria and the chloroplast. These organelles have their own storehouse of information in the form of organelle DNA. Organelle DNA codes for a few genes. The coding information for the rest of the gene reside in the nuclear DNA of the same cell. If an organelle DNA has been sequenced, the appropriate position in the sequence submission form must be mentioned. Other molecule, in the addition to these molecules, the database contains the sequence of other molecules such as tRNA and other small RNAs. तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा और सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यूज होते हैं. अब हमारे मेजर डाटाबेसेस के बारे में, डाटाबेस रिट्रीवल टूल्स के बारे में बताया है, ब्लास्ट फैमिली के बारे में बताया है कि ब्लास्ट फैमिली ऑफ सर्च टूल्स. So this we will be doing in our next video, because it needs time and it needs freshness to start with a new topic, and then the chapter will finish. So 4-5 topics are remaining in this chapter: genomics, proteomics, and bioinformatics. And we will be doing database retrieval tools and major database in the next section, the next video. I hope you will like the video, and if you like the video, then you may hit the like button and share and subscribe with your friends who are reading biotechnology online. Thank you and have a nice day.